Hello everyone, myself Ayushi Goel, and today we are going to learn about the tips and tricks to solve your 12th grade chemistry board examination. Now, see, many of the students have this notation now that chemistry is very easy. Okay, it's easy. I do also believe that chemistry is easy. But my question is that maths is very difficult, but students are scoring 100 out of 100 in maths. Chemistry is very easy, but still students doesn't able to score 100 out of 100 there. Why? Now this is a psychological question, because whenever any subject or anything is easy, this is in our mind now, okay, we'll able to do it, and that thinking make us down. That's what happened, and that is the reason why the student was not able to score 100 out of 100 in chemistry, being an easy subject. So the first today, I give you the certain points which you need to remember while you are doing your chemistry paper. And then second, in the last webinar, I have told you about it, that I'll give you the past 10-year questions. So the past 10-year questions, now if I have seen this, there's a pattern in the past 10-year question. What was the pattern is that they were taking the NCRT questions, type of an NCRT questions. Like if I'll go within NCRT, there's a question about naming an isomer, or what type of isomers it is showing. Same type of a question repeated again and again in a paper. So I have created a list of the questions which I'll share with you, which I'll show you, and we're going to learn those lists one by one, and we are going to see that portion, that what you need to practice before you give your chemistry examination, along with whatever you are doing, guys. Okay, so should we start with this one? Let's go ahead. So is my screen visible to everyone? Okay, in Unnati, for you I'll speak in Hindi as well. तो उन्नति, मैंने अभी बताया कि जो मैथ्स है वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। फिजिक्स भी बहुत मुश्किल है, बट बच्चों के मैथ्स और फिजिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट फिर भी बच्चों के पूरे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि ये तो हम कर ही लेंगे, और ये एटीट्यूड है जो हमें पानी में डुबा देता है। ठीक है ना? तो उस एटीट्यूड से बाहर आकर के हमें ऐसा क्या करना है कि हम केमिस्ट्री में से मे बी 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाएं। दैट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड ओके, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे दूंगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है ना, उसके अंदर ना एक छोटा सा पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि बिल्कुल सही, बहुत आसान है केमिस्ट्री, फिर भी 100 में से 100 नहीं आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आधा एक नंबर तो वो काट ही देंगे। तो उस चीज का ध्यान रखना है। Okay, and along with that, what we need to do today in the NCRT questions, whatever the exercise they have given and the in-text question which they have given, those important things which have been repeatedly asked in paper, that questions I'm going to provide you. तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, मैं वो क्वेश्चन नंबर्स आपको दे दूंगी चैप्टर वाइज। और कुछ चैप्टर्स के अंदर जैसे हमारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, या फिर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि वो आपको पेपर से पहले आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है? हाँ, यस, मैंने बोला था ये बात। गुड, आपको याद है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आपको टिप एंड ट्रिक्स में याद करनी है और समझनी है, दैट इज रीड एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी। Whatever given in NCRT, you have to read it at least 2 to 3 times. It's not just for chemistry, it's for your physics also, it's for your maths also. And whether you are giving your computer science examination or your English examination, it has to be done thoroughly. Yes, I have taken a class after a 2 week. So let's see. So in this case, you have to thoroughly go through diagrams in between questions and exercise of NCRT. Everything, all the diagrams which are given.
Diagrammatical questions, there are some activities which are given in the book. Then you are having the in between questions, examples which are given. Oh, sorry. Let's just keep this G. This is another trick. If you have written anything in a spelling wrong, just cut it like this one and go ahead. Don't make it a blunder like this. You are doing scratching, scratching, scratching. No, don't do that. Simple. Simple, just cut with a single line. Okay. The next thing what do we have is exercise. See, if you have revised chemistry, if you have learned everything, then you are revising it so you can solve all the questions. Now, I know there are certain students who have a fear of chemistry. So for you, I'll give you some important questions. Do practice those questions at least twice. That is very important. Those who have done with the NCRT book and all the questions, for you guys, go with your model test paper or your sample test paper, which is given by the NCRT and by your CBSE. So this is the second point. सैम्पल पेपर. हाँ, मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ और हिंदी में भी बता रही हूँ, आप दोनों सुन सकते हो, ठीक है ना? तो एक बार और बच्चों के लिए और एक बार आपके लिए. तो सैम्पल पेपर्स बहुत जरूरी हैं. तो मैंने बोला है कि जो एनसीईआरटी पूरी कर चुके हैं, एक बार पूरी पढ़ चुके हैं, उसके सारे सवाल एक दो बारी कर चुके हैं, उन बच्चों को अब सेकंड स्टेप पे आना है. सेकंड स्टेप क्या है आपका? सैम्पल पेपर्स. और सैम्पल पेपर्स ना ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ने हैं. सैम्पल पेपर्स ना प्रॉपरली बैठो, सॉल्व करो 3 घंटे और खुद को मार्क्स दो. So you have to sit for a 3 hours and do the paper and then give yourself a marks. नहीं, उन्नति आप अकेले नहीं हो, और भी बच्चे हैं, बट जस्ट यू आर कमेंटिंग. ठीक है? तो सैम्पल पेपर्स 3 घंटे के लिए करना है. 3 घंटे बैठो, अपना सैम्पल पेपर करो, उसमें अपने आप को मार्क्स दो. और ये मार्क्स देना ना, मतलब इस तरह देना कि मतलब कंजूसी कर रखे मार्क्स देने में. So when you are marking yourself, na mark yourself in such a way that the teacher is going to give you marks in every single step. Means even you are doing a spelling mistake, na the person is going to cut your marks. Give yourself that. Then after, if you have done with the sample papers also, because most of the students have practiced sample papers for their pre-board examination, then you have to go with the previous year papers. अब पिछले साल वाले जो पेपर्स है ना, उन्हें भी प्रैक्टिस करना है. एटलीस्ट 2 साल के पेपर्स प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जो हमारा सीबीएसई है ना, वो हर साल पैटर्न थोड़ा चेंज करता रहता है. अभी उसने इस साल क्या पैटर्न दिया है, मैं आपको वो भी बताऊंगी. बट यू हैव टू सी कि पिछले 2 साल से वो आपको किस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है, क्योंकि वो हमेशा ना सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछता है. सीबीएसई के पास एक डिफाइंड एनसीईआरटी बुक है, उससे ही वो सवाल उठा सकता है. तो वो ऐसा क्वेश्चंस के अंदर क्या करेगा, न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज कर देगा, या क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज चेंज कर देगा, बस इतना ही डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. बट क्वेश्चंस हमारे वही होते हैं. कोई ना वो नेम रिएक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर सकता, ना वो कोई दूसरी रिएक्शंस को इधर उधर चेंज कर सकता है, ना वो कोई नया फॉर्मूला पूछ सकता है, ना वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है जिसमें वो आपसे 3-4 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करा रहा है. वो ये भी नहीं कर सकता. तो वो सिंपल से सवाल पूछ सकता है. तो सिंपल तरीके से उसे कैसे अटेम्प्ट करना है ये. अब दूसरा चीज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है राइटिंग स्किल्स. अब देखो, आज मैंने थोड़ा जानबूझ के ना थोड़ा खराब खराब लिखा है. अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा छोटा भी लिख रही हूँ आज, और इम्पोर्टेंटली मैं थोड़ा सा ना इधर उधर वर्ड्स भी इधर उधर कर रही हूँ लिखते हुए, ऊपर नीचे. क्यों? क्योंकि आपको समझ आए, हर किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती. देखो मेरी हैंडराइटिंग है, बहुत अच्छी है, बट कभी कभार वो खराब भी हो जाती है. तो अब उस टाइम में जब हम खराब लिखते हैं, कि बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है दैट माय फर्स्ट 2 पेपर्स आई हैव राइट लाइक every word is clear, and after that what happens, that my handwriting is very bad because I'm in a hurry to write. इट्स वेरी सिंपल, ये सबके साथ है कि पहले 2-3 शीट्स तो हमारी बहुत अच्छी लिखी होती हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सबसे बेकार हम लिखते हैं, बिल्कुल घसीटे मारे होते हैं, चीटियां कीड़े मकोड़े टाइप लिख रहे होते हैं.
तो उस हैंडराइटिंग में हमें क्या दिमाग में रखना है कि मैं सही से अपने पूरे मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो पहली चीज, जब भी आप कोई भी शब्द लिख रहे हैं उनके बीच में थोड़ा गैप रखिए। जैसे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर, राइटिंग स्किल्स, 3 आवर्स, डू द पेपर, मार्क्स, हर चीज के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। हैंडराइटिंग कैसी भी हो, अगर गैप होगा तो वर्ड समझ आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक पॉइंट लिखा, एक गैप छोड़ दिया, दूसरा पॉइंट लिखा, फिर गैप, तीसरा पॉइंट लिखा, फिर गैप, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आई तब मैंने फिर लाइन छोड़ दी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा ना कि इजीली दिखेगा कि क्या लिखा है। और जो बच्चे घसीटे मारे होते हैं ना पेपर के अंदर, वो भी ढंग से पढ़ा जाएगा। क्योंकि सामने जो आपका पेपर चेक कर रहा था, जब द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर, if the person was not able to understand what you have written now, you will not get the marks, because they will cancel out and they will move on. They are not going to waste their time to check your paper. No, they are not going to do that if your handwriting is not readable. तो बहुत जरूरी है कि हमारी हैंडराइटिंग रीडेबल हो। मैंने बच्चों को मार्क्स लूज करते हुए देखा है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद उनके मार्क्स काटे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है तो भी मार्क्स कट गए। मतलब ए और डी ऐसे बनाकर आते हैं, पता ही नहीं चल रहा था कि ये ए लिखा हुआ है कि ये क्यों लिखा है, क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा तरीके से लिखना पेपर बहुत जरूरी है। तो ये राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्लो राइटर, स्लोली राइटिंग। कोई इश्यू नहीं है, स्लो लिख रहे हो, तेज लिख रहे हो। 3 घंटे का पेपर इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि कोई भी बच्चा एक नॉर्मल स्पीड में 2.5 घंटे में लिख सकता है पेपर। आप 2 घंटे 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे में लिख दोगे। दैट्स इट। So when you are writing in a proper, if you're a slow writer, then in that case, write point wise. Don't waste your time to making a frame of a sentence. This is not an English paper. You have to make your point and then move on. तो क्लीन हैंड राइटिंग समझ आ गई, स्लोली राइटिंग वालों को समझ आ गया, जो लास्ट में घसीटे मारते हैं उसके लिए क्या स्किल करना है वो भी समझ आ गया। मार्क्स पूरे चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। सो इसके बाद हमें क्या करना है अब, मेजरली ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं सब कुछ पढ़ के गई हूँ, मैंने सब कुछ प्रैक्टिस कर रखा है, बट अब ये क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा। मतलब पता है मुझे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, बट इज आई एम नॉट एबल टू स्ट्राइक दैट आंसर। डोंट पैनिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डोंट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, or you forgot what the answer of the question is. Don't panic. This is the most and the most important thing. I'm writing in the highlight word. Don't panic. Why? Because you need to understand the one or two questions when you are panicking, that is actually affecting your next 5 questions. So if you don't able to remember that question, move ahead. कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया या उसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो, या उस क्वेश्चन को वहां से काट दो। कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चन अगर छूट रहा है, कोई इशू नहीं है। 80 मार्क्स में से 4 मार्क्स रह गए, 76 अभी भी अटेम्प्ट करने हैं। और जब टाइम बचेगा ना तो आखिरी में आकर उसे अटेम्प्ट कर लेना। जो भी उसके आसपास की चीजें पता होगी ना, लिखाना। कुछ ना कुछ तो मैच करेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। चाहे आधा नंबर ही मिले, चाहे 1 नंबर ही मिले, बट वो लॉस नहीं होगा। बट अगर पैनिक कर गए तो अगले 10 नंबर का लॉस आएगा। और ये बहुत बच्चों के साथ होता है, स्पेशली जब वो बोर्ड्स के अंदर बैठे होते हैं। बहुत समझा रही हूँ ये बात। डोंट पैनिक अगेन एंड अगेन, डोंट लूज योर मोटिवेशन while you are doing your paper, and do write the answer properly. Is that clear? If you panic in your examination, if you lose your cool temperature in your examination, then I don't know what you're going to do in the chemistry.
And always there is a one or two type of like a conversion questions which will come, that you know that this reaction is there somewhere there. You know that you have seen that product, but you are not able to write it properly, or you just forgot what is happening. Don't panic. Move ahead. There's no issue with that. Okay, good. अब इम्पॉर्टेंट कि हमारा पेपर किस तरह से फ्रेम हो रखा है। तो अगर हम अपना पेपर देखें, तो पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। उसके अंदर हमारे पास दो तरह से हमारे पास, सॉरी, हमारा पेपर है 70 मार्क का, 30 मार्क हमारे प्रैक्टिकल्स में। अब हमारे पास क्या आता है कि पेपर के अंदर दो तरह के आपके पेपर होंगे। एक हमारे पास आएगा 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, और हमारे पास रिमेनिंग मार्क्स विच इज योर 46, दैट इज सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर बाइफिकेशंस होती हैं। अब हमारे पास बाइफिकेशंस क्या है? 12 हमारे पास एमसीक्यूज हैं, 4 हमारे पास रीजनिंग एंड असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, और 8 मार्क का हमारे पास आते हैं केस स्टडीज। ओके, अब रीजनिंग एंड असर्शन टाइप के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं रीजन एंड असर्शन। सो असर्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट दे रखी है ना, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है। लेट्स से दे हैव गिवन यू अ स्टेटमेंट कि MnO4 इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज एन असर्शन, ओके, बिकॉज दैट शुड बी द रीजन। तो असर्शन और रीजनिंग में उन्होंने जो भी स्टेटमेंट लिखी है उसके आगे बिकॉज लगाओ, और अगर वो रीजन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जस्टिफाइबल है। नहीं कर रहा तो रीजन देखो क्या ट्रू है या फॉल्स। समझ में आई ये बात? इस तरह से असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आया, लेट्स से KMnO4 वाला ही लेते हैं दोबारा से, तो KMnO4 इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज manganese in the highest oxidation state, that is +7, now it only it can reduce. So ये correct reason है, तो मैं इसे correct explanation में दे दूंगी। Because it is purple in color and changes its color in the medium। ये statement true है, but ये reason नहीं है। तो इस तरह से check करना है। I hope this point is clear. Good. Now in the subjective questions, we have to see how we are going with the theory part. So, and if we see with the paper here, the paper pattern. So in the case of paper pattern, what is happening? In the paper pattern, the syllabus is bifurcated with your portions like this. So this is the chapter. And this is the basic part here. So what is the solution chapter is of your 7 marks. Then you have electrochemistry. Then you are having chemical kinetics, D and F block, and coordination. So if we see the first 3 are your physical. In this, you will be getting numerical questions. Maybe 1 or 2 with the theory part. Then you are having inorganic. In inorganic, you are having proper theory. And then organic. Okay, I'm not taking biomolecules in organic because it is proper learning. Learn NCERT. That's it. This is a bifurcation and you have to learn it very carefully. Yes. Till this part, do you have anything, any doubt, any point, anything you wanted to ask to me? Because after this, I'll give you the NCERT book questions. Yes, I'm asking again. यहाँ तक कोई भी दिक्कत या कोई भी चीज जो आपको समझ ना आई हो, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या पेपर में किस तरह से लिखना है, पेपर के अंदर पैनिक नहीं करना है, और पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है इस पार्ट के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या कि अगर हमारे पास सेक्शन वाइज है तो आपको हमेशा 5 से 10 मिनट पढ़ने के लिए जाते हैं, एक्चुअली 15 मिनट दिए जाते हैं। तो उस 15 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है? फटाफट फटाफट पेपर पढ़ो, ठीक है? पेपर पढ़ने के बाद ये देखो कि कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा पेपर आता है। मान लो मुझे सेक्शन बी का पेपर पूरा समझ आ गया, तो पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करो। जरूरी नहीं है सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है। सेक्शन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल, ऐसे सेक्शन लिखा,
इस तरह इसको स्क्वायर बॉक्स में डाल दे ताकि ये अलग हाईलाइटेड दिखे, क्योंकि मैंने बहुत खराब राइटिंग में लिखा है। और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर अगर मेरे पास आ रहा है फर्स्ट 24 हमारे, सॉरी फर्स्ट 12 16, तो क्वेश्चन नंबर 17। अब ये नंबर ना प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, दिखने चाहिए कौन सा नंबर का आंसर आप दे रहे हो। ठीक है, अब मैंने इसका आंसर लिख लिया, कुछ XYZ मेरा आंसर आ गया। उसके बाद एक लाइन खींच दो ऐसे ही पेन से, टेढ़ी मेढ़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके बीच में हमेशा गैप रखना। So when you are solving your paper, when you are writing your answer sheet, do keep this in mind that you are keeping a gap between these words, these lines, and you are able to write it properly. This is very, very important. Is that clear? Yes, no? Okay. I'll show you the how the students normally used to write. So these are the two answer sheets which I have with me. Okay. So as you can see how specifically it is written, you will get full marks in this case. तो इस बच्चे ने प्रॉपर सेक्शन ए लिख रखा है, उसके नीचे लाइन खींच रखी है। अब उसने आंसर वन लिखा, प्रॉपरली मुझे वन दिख रहा है कि वो वन का आंसर बता रहा है। और वन के आंसर में भी उसने क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। कर दो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रहेंगी। एंड देन सी दी बेस्ट थिंग, व्हेन ही वाज स्टार्टिंग आंसर टू, ही लेफ्ट अ टू लाइन गैप। अब बाय चांस रिवाइज करने का टाइम मिल गया, व्हेन यू आर गेटिंग द टाइम टू रिवाइज इट अगेन, एंड यू रिमेंबर सम एग्जाम्पल or maybe a reaction, inorganic or organic reaction, you have two line spaces to write here. Is that clear? Good. And let me show you the worst handwriting also, that how the students used to write with a such a bad handwriting. Now see this one. See, even if you write like this, now your handwriting is this bad, still you will get the marks. This is what I'm telling you. Don't lose hope if you have bad handwriting, if you are writing anything. So I am 110% sure this is your first page handwriting and this is your last page handwriting. Same person. Yes? पहले पेज पे ऐसी हैंडराइटिंग आ रही होगी कि भाई सब कुछ, सारे पॉइंट्स वगैरह सब नोट डाउन कर रखे हैं, और आखिरी पेज पर इस तरह से घसीटे लग रहे हो। Then in that case, just remember what I have told you. Leave the spaces in between the words and leave the gap after a question and do write the numbers properly. मतलब इस बच्चे को पूरे मार्क्स मिल जाते। इसके मैंने आधे आधे नंबर काट रखे हैं। क्यों काट रखे हैं, कि अगर वो थोड़ा सा डिफरेंस कर देता, जैसे इसने स्किन कांटेक्ट को अंडरलाइन कर देता, फिर एयर को अंडरलाइन कर देता, वाटर को अंडरलाइन कर देता, एक यहाँ पे दो लाइन का गैप दे देता या ऐसे लाइन खींच देता, 26 को ढंग से लिख देता, बस इतनी चीजों में नंबर मिल जाते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर राइटिंग एंड हाउ यू आर राइटिंग। ओके, till this part, till this tips, anyone has any doubt or any query? Yes, we have Unnati, we have Ridwan, and there are other students also. No? Okay, let's go ahead. So now I'm giving you all the chapters and their important exercise questions from your NCERT booklet. Do write and do note these questions and the important topics one by one. If you have a new book or if you have an old book, there is no issue. There's just a difference in the chapter name. The question numbers are absolutely same. ओके, तो जिन बच्चों को अब कोई डाउट नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास ना चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और इंटेक्स के अंदर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पिछले 5 सालों से पूछे गए हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाओगे प्रैक्टिस, तो एटलीस्ट 80 to 90% के बीच में आपके नंबर लाए करेंगे। और ये क्वेश्चंस तो जरूरी करके जाने हैं, तो वो क्वेश्चंस बता रही हूँ।
अब इन क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर चैप्टर नंबर डिफरेंट है, और जिसके पास नई एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर डिफरेंट है। क्वेश्चंस एज इट इज है, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपकी पुरानी वाली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा, और न्यू बुक के अंदर हमारे पास आएगा ये चैप्टर 1 के हिसाब से। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है, और एक इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं। तो जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे पास 2.4, 2.5, 2.9, 2.12, 3540 और 2.41, ये हमारे क्वेश्चंस है जो आपको जरूर करके जाने। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस at least 2 times. And then in text question you have 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.11. And in the new book this is as a exercise question as 1.4, 1.5, 1.9 and so on. That's it. The number after point is not changing. The first number which is representing the chapter, that is changed. Rest everything is same. You have to practice these questions from the NCERT. There is no if, there's no but in that portion. After this, the second part, we have a second chapter. Second chapter is your electrochemistry. In the electrochemistry, if I talk about in-text questions, those are 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, and 3.10. Repeatedly asked questions. Exercise questions, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.18. और ये हमारी न्यू बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से आ रहा, तो 2.2, 2.5 और लाइक दैट विल बी देयर। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। You can do it in the both way, Ridwan. If you are going with an MCQ questions, then the MCQ questions, what you can go, like I'm answering MCQ question. So first is A. If you are writing A properly, then there is no issue. Or you can write it like this. There's no issue with that. Or you can write the complete sentence also. My advice to you is if your handwriting is not proper, then write the sentence. No, otherwise write A, B, C, D. That will work. Okay, good. After the electrochemistry, we have the next chapter. Do note this questions. This is very important. Chemical kinetics. Okay, those who are in the HOME 12A21. So this is a webinar. So you can see the questions again if you are not able to note down here. Okay. Good. So in the chemical kinetics, we have the questions of the in-text questions. This is chapter 3 in the new book. So in-text questions will be your 4.3, 4.4, and 4.6. And your exercise question, these are the repeatedly asked questions, okay? Exercise questions are very important. So we have 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.11, 4.16, 18, 19, 23, 26, 27, and 30. Repeatedly asked questions. Their chapter number, you can write it, okay? And this is the third chapter in your new book. Then we have, after chemical kinetics, we have D and F block. Most important theory type question. Proper theory type questions. Especially your properties of KMNO4 and K2CR207. Color change, heat effect, acid and basic effect, and how they are changing any redox balance. This is there in the portion. डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं K2CR207 की और KMNO4 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से एसिडिक और बेसिक नेचर के अंदर चेंज हो रही है, हीट में कैसा इफेक्ट शो कर रही हैं, और कौन सा कलर चेंजेस दे रही हैं, ये बहुत जरूरी है।
इसके अलावा हमारे पास जो इंटेक्स क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, वो इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे पास है 8.3, 8.9 और 8.10। और हमारे पास जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं 8.3, 11, 21, 25, 26, 28, 29, 30 एंड 34। रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, डीएनएफ ब्लॉक के अंदर से आएंगे ही आएंगे कि क्यों व्हाई द कॉपर प्लस वन इन एक्वा सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल। आइदर ये आपका एमसीक्यू हो सकता है और आइदर ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन नीचे आ सकता है। ये 3 मार्क के अंदर ये आपका 111 पॉइंट आ गया। और में क्वेश्चंस आते हैं तो वो जनरली और के अंदर भी सेम चैप्टर के क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना। ये आपका चैप्टर 4 है न्यू बुक के अंदर, सेम 4.3, 4.9, 4.10, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको। इसके अंदर से आइसोमर्स हमारे पास आएंगे, इसके अंदर से आईयूपैक नेम जरूर आएगा, और इसके अंदर से हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे कि ये कलर चेंज क्यों दे रहा है, क्यों हमारे पास डीडी ट्रांजिशन हो रही है। तो ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में किस नंबर से दे रखे हैं एज एन इंटेक्स क्वेश्चन, दे आर एज 9.1। ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक में 9th चैप्टर था और न्यू बुक के अंदर ये 5th चैप्टर है। सो 9.1, 9.2, 9.6, 7, 8 एंड 9। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है हमारे पास 9.5, 9.6, 7, 8, 10, 11, 13, 18 and 22. Clear? Do practice these NCRT questions if you wanted to score around 80 to 90% in your school examination, in your CBSE examination. Good. Next we have is halo compounds. Okay. In halo compounds, if I'll go with the exercise, so exercise के अंदर हमारे पास आ रहा है 10.1, 10.2, 10.4, 10.11, 12, 15, 16, 19, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। इंटेक्स सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो आपके एक्सरसाइज से भी मैच कर रहे हैं, इंटेक्स के बीच के भी क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 6 आएगा आपकी, यस, चैप्टर नंबर 6 आएगा ये आपकी नई एनसीईआरटी बुक के अंदर। अब इस केस के अंदर हैलो कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव कंपाउंड है। एक्टिव और इनएक्टिव, ये हमारे पास एमसीक्यू टाइप में जाएगा। दूसरा हमारे पास SN1 एंड SN2 के क्वेश्चन आएंगे। SN1 एंड SN2 क्वेश्चन इन एमसीक्यू। और यहां ही से एक क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजनिंग का बनेगा, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से बना लिया उन्होंने क्वेश्चन, या फिर उन्होंने SN1 SN2 से हमारा एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, या फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट टाइप का क्वेश्चन। सो दैट यू नीड टू लर्न, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। हैलो कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर सबसे पहले नेम रिएक्शंस, which are always asked if you see in the paper. Cold base electrolysis or cold base reaction. Then you have Riemann Tiemann. Then you have Williamson
Synthesis, that is for the ether, always asked. And then most important is their oxidation reactions. See, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होते हैं बहुत इजी चैप्टर है। अरे इजी तो पूरी केमिस्ट्री है बच्चे, अभी तो बताया पूरी केमिस्ट्री इजी है, फिर भी 100 में से 100 नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट है केमिस्ट्री में। कितने प्यार से समझा रही हूँ आपको, यही बात समझा रही हूँ, केमिस्ट्री इज वेरी इजी, बट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। शुरू में सबसे पहले यही चीज बोली थी, मैथ्स बहुत मुश्किल है, 100 में से 100 लाना आसान है। केमिस्ट्री बहुत इजी है, उसमें 100 में से 100 लाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, आसान है, हो जाएगा। We think psychologically that it is very easy, so we are able to do it. And when we go and sit in the exams, when we see the question paper, and then we come out of the question papers and then come out of from the examination hall and you will be like, बकवास केमिस्ट्री है, छोड़ दो, मैथ्स पे फोकस करते हैं। ओके, डोंट डू दैट। केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करना बहुत आसान है, स्पेशली इफ यू वांटेड टू स्कोर अबाउट 80 to 90%. There are typical type of questions. There were typical type of things which they always asked. If you practice those things, if you have solved those questions at least 2 times, you will be able to solve the paper. 80 to 90% of your paper. उसके बाद स्कोर करना डिफिकल्ट है। Got it? मतलब जो लास्ट के जो 14-15 नंबर होते हैं ना, वो लाना डिफिकल्ट होता है। मतलब जो हमारे मार्क्स होते हैं बिटवीन 50 to 56 मार्क्स, वो केमिस्ट्री में लाना बहुत आसान है 70 में से। उसके बाद 56 के बाद जब हम 62, 63, 65 की रेंज में आते हैं, दैट कम्स व्हेन यू हैव प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो वो चीज करके जानी है कि हम स्कोर कर सकें बेटर मार्क्स। और एक चीज बता दूं, केमिस्ट्री ही परसेंटेज को अप कर देती है, केमिस्ट्री परसेंटेज को डाउन कर देती है। जहां 5-6 नंबर केमिस्ट्री में इंक्रीज हो गए, वहीं परसेंटेज 1-2% ऊपर चली गई, पीसीएम में फर्स्ट क्लास नंबर आ गए। If you have scored well in chemistry, it will get your percentage up or down. Both things are done with the chemistry. So let's go here. So we were talking about the alcohol, phenols, and ethers, and I have told you the chapters. Then the in-text questions. This is chapter number 7 in new book. And in the old book, it is as a chapter number 11. So your in-text questions are, we have 11.5 and 11.6. These were repeatedly asked questions. Rest all are important, but these are most must. And the exercise 11.4, 11.5, 13, 14, 15. These are conversion questions. 17, 20 and 21. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कन्वर्जन क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी के, वो सारे करके जाने हैं। उसी में से क्वेश्चन फ्रेम होता है हर साल। Whatever the conversion questions are given in your NCERT book, you have to solve every question. They are going to ask the question from their own. They never ask the question outside from their conversion factor. हाँ, ये हो सकता है ब्रोमो इथेन की जगह ब्रोमोप्रोपेन बनवा दिया या ब्रोमोपेंटेन बनवा दिया, बट स्टार्टिंग मटेरियल सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। They can change the product, but the basic part is same. Like instead of making your bromoethane, they are making it, telling you to make bromopropane or bromopentane like that. That is the only difference. Now we have the next chapter, that is your aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Okay, before I move to this, I forgot to tell you about in the oxidation reactions. Do learn the reagents, because there are certain specific reagents which stop the alcohol to aldehyde and ketone, and there are certain agents which will stop them to an acid. And in different conditions, they will give you CO2 as a gas. Like if I'm taking KMNO4 and I'm oxidizing in the acidic medium, so it will end up with the acid. And if I'm providing a heat, it will end up giving you carbon dioxide. That kind of a questions.
or for converting the alcohol to aldehyde, you have PCC, PDC, like those questions. Is it clear? Good. Now in the aldehyde, ketones and carboxylic acid, first name reaction. So what are the name reactions? Canizaro. In the last class also I told you Canizaro is very important. Aldol, you will always see aldol and cross aldol. Cross aldol से MCQ frame हो सकता है. There will be an MCQ which can be framed in the cross aldol, like I am giving you acetaldehyde is reacting with acetone. What are the cross aldol products? I have given you 4-5 products and then options. A, B is correct, B, C is correct, C, D is correct, like that. Then we have next name reaction, HVZ. These are the preparation reactions which are important. Then you have reduction reactions. These are also name reactions. So we have Stephens reduction. Then we have Ulf-Krishna. Clemenson. And Etard. Directly asked, always either one of the reaction will directly get in your paper. Directly. Next, the important questions and their conversions. Always remember the aldehyde and ketone is a middle point. So ब्रोमो से हैलो कंपाउंड से अल्कोहल तक, अल्कोहल से एल्डिहाइड तक, और एल्डिहाइड से एसिड्स एंड वाइस वर्सा. तो बीच में ना अल्कोहल्स और एल्डिहाइड ना कॉमन पॉइंट है. तो इसमें से हमारे पास मिक्स क्वेश्चन बनते हैं ABCD टाइप के. तो इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्ट. फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलिन सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस टेस्ट, और यू आर हैविंग द हैलोफॉर्म टेस्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टेस्ट हमारे पास आ गए. फेरिक टेस्ट आ गया, फेरिक क्लोराइड टेस्ट आ गया कि बफ कलर दे रहा है हमारे पास, या फिर हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट आ गया, बाइकार्बोनेट टेस्ट आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट. So next test. How will I differentiate between this and that? Very important. Now the questions, in-text questions. 2, 12.5 and 12.12. Sorry. On 12.12, 12.12 exercise. These are the questions from the in-text. Every in-text question is important, but these are mostly asked. Then we have exercise. Okay, so in the exercise question, what do we have here is, in the exercise we have 12.3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 17 is also important. Repeatedly asked questions. सारे पूछे गए हैं दोबारा बार. Solve those questions, practice those questions, highly important. Next chapter, amines. Okay, those students who have learned with me and they have taught with me in the class, now you have seen that my handwriting is very good. Here I'm deliberately writing bad. So you can understand with that bad handwriting also, you can understand the words and will get good score. Just small tricks which I have told you. Leave the gap between the words. Leave a line after the writing a point or anything. Next we have is amines. In the amines, basic strength of amine. Very, very important. Because in the basic strength of amine, there are two fact-based questions and the normal questions. One of the fact-based, when you are having a methylamine or dimethylamine or trimethylamine in aqueous solution or in gaseous state. So in aqueous solution, the steric hindrance and the hydrogen bonding are responsible to change their basic strength. Okay, in gaseous state, normal factor. So basic strength is increased by electron donating groups and decreased by electron withdrawing groups. This is in the gaseous state.
In aqueous solutions, the question from the ethyl and methyl alkenes, those you need to learn. There's a fact which we need to understand. Okay, for you उन्नति, जो एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे पास दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो डायरेक्ट होते हैं और एक फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से और डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से और डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। बट ये क्वेश्चंस होते हैं गैसियस स्टेट में। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है उनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को चेंज करने में। अब ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखे हैं। अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो अमाइंस में दो फैक्ट बेस्ड आते हैं, एक तो इथाइलामाइन का आता है और एक डाइथाइलामाइन का आता है। तो इथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन और ट्राइमिथाइलामाइन, इथाइलामाइन सॉरी, और सेम मिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन एंड ट्राइमिथाइलामाइन, इनके बीच में क्या रिलेशन है। और अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस गिवन है जिसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर चेंज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो इन्हें याद कर लें। ये एज इट इज पूछे जाती है, ये एक नंबर में, दो नंबर में एज इट इज आएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एमाइंस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास नेम रिएक्शंस होती हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड, डिग्रेडेशन। देखो गैब्रियल थैलामाइड तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्योंकि वो अमीन्स की प्रिपरेशन के अंदर है। अब हॉफमैन ब्रोमाइड जो होता है ना, वो इनडायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आएगा जरूर हॉफमैन ब्रोमाइड बट इनडायरेक्ट वे में आएगा। So you will get Hoffman bromide reaction, but indirectly. So you have to see the reagents and then you have to solve the question. Then carbyl amine test and diazonium salt. बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन पॉइंट्स जो हमें याद करने। इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं? ऑर्गेनिक के सारे इंटेक्स इंपॉर्टेंट है, बस जस्ट मैं कुछ रिपीटेडली पूछे हुए दे रही हूँ। And exercise, we have 13.3, 4, 5, 9, 11 and 14. और ये चैप्टर नंबर 9 है न्यू बुक के अंदर, सो इट 9.4, 9.8, 9.9, ठीक है ना। लास्ट, बायोमोलिक्यूल्स। Biomolecules is a chapter which you just need to read again and again, again and again, again and again, till everything goes in your mind. It's a proper theory, proper learning chapter. अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज से। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स क्या प्रोडक्ट देगा? What are the product forms? Sucrose, maltose, lactose. Okay, and then you are having starch and then you are having cellulose. Glycogens की सिर्फ theory है, you just need to learn that part. Then after that we have denaturation of protein, always asked, always. Hello Shivam, yes. Yeah, diagrams are bad in this chapter, leave the diagrams, you don't have to learn those diagrams, I'm not going to learn that, just learn how to draw it. So denaturation of protein. See, I don't going to learn like protein is having an alpha beta structure. So how will I know that? No. So if I have to go with an alpha helix, I'll draw it like this. Okay, and then I'll show that it has an hydrogen bonding and it has a disulfide bond. That's it. Finish.
If I have to go with the beta pleated sheets like this, don't go with the very bad, like this one. And write that this is a disulfide linkage and this is your hydrogen bond. Simple. Yes, I have given the sheets. I have given the in-text questions from the repeated past 5 years questions from the NCRT book. If you want, I can take a screenshot of this one and share it with you in the link. Or those who have started with me, and that is in the HOMI 12A21. Okay? Yep, that you have noted. So you can see it here. These are the important questions. See, in the previous year na, in the NCRT from, if I'll talk about for your chemistry paper na, there are same type of a questions which they have asked. They have just changed their numerical values and few questions, few topics I have given you because these questions were repeatedly go. Like if I talk about you DNA and RNA, always asked difference between DNA or RNA or the pyrimidines and your purines which are present in DNA and RNA, what kind of hydrogen bonding they show or their diagrams. So you have to learn the diagram of adenine, guanine, and cytosins like that. And deficiency and diseases. So what will you get if you don't eat vitamin A or vitamin B, vitamin B12 like that? One mark question always there. So we have eight vitamins were given and 8 diseases are given. Learn that. You can learn 8 diseases for 1 mark. And in text questions, 14.5. This is a 14 chapter in the old book, and in new book, it is under the chapter name 10. And in the exercise, you are having 14.2, then 5, 6, 9, 11, 12, 14, 22, and 29. Repeatedly asked questions. So with this, your complete portion is over. Now I'm ready to take your queries. Whatever query you guys are having when you are practicing your chemistry paper. I'm again telling you, chemistry is very easy. Don't take it lightly, otherwise you will fall. Yes. Okay, as you have seen, I have written very bad handwriting. So still it is readable. Why? Because I'm keeping the words apart. Those who are writing small also, no issues. Just leave certain spaces between when you are writing the words. I have shown you the way that how you used to write. So this is a first page in writing. This is a last page in writing. No issues. You can do whatever you want. You can write whatever way you want it. Just keep in mind that the words should be readable. That's it. Because if the words are not readable, teacher will not give you marks. If they are readable, they will give you marks. Yes. Any other part, any other thing you wanted to ask? Or the question numbers, I'm again showing. If you want, you can take a screenshot. So this is a solution chapter question. This is chapter number 2 in the old book, chapter number 1 in your new book, NCRT book. Exercise index question. Then electrochemistry chapter. Then you have chemical kinetics, D and F block, coordination, halo compounds. In halo compounds, you will be getting MCQs, especially on optical activity, SN1 and SN2 order. And there are going to be a one assertion reasoning from halo compounds only.
Alcohol, phenols, and ether. Very important because it is an in-between chapter of your complete organic. So if you wanted to go to the halo compounds, alcohol is one of the steps. If you wanted to go towards the aldehyde ketones acid, alcohol is one of the step in between. You can go directly on the askIITians site and you can see the previous year question papers are given there. If you go on the askIITian website, just a second, let me share with you. Okay. Um, See, if you go on the askIITian site, na, it will show you that the resources. So you can go on the resources, school examination. Then in the resources, you can have uh, past papers are there. So engineering, medical, or school examination. So you can have whatever paper you wanted to see. Or in the school exams, if you go with CBSE 12th grade paper, so it will open a sheet like this for you. And here you can see all the board papers and previous year question papers you can find here. Question papers, answer sheets are also there. So you can go with the homework questions and their solutions as well as are given. And in resources, you can see the past year papers. If I'll go with the school examination, then I have class 12th examination. So the sets are given. I hope with these solutions, they have given everything. Not just for the chemistry, they have given you for the physics, maths, biology, English elective, and then you are having biotechnology, electrical mechanics, and everything. Microbiology. Those who are giving those papers as well. This is free for every child. Yes. Next out. Anything else you wanted to discuss? Anything else you wanted to say? Any question which is there in your mind? I'm again repeating it. Conversion questions from organic, NCRT questions. Test from the organic. These are very important. Name reactions from organic. Okay. In your physical, there will be a numerical type of a question. Practice all the numericals which are given in NCRT. You do not have much time. Practice NCRT first and the foremost thing. Next part which you wanted to ask. ओके उन्नति के लिए रिपीट कर देती हूँ. उन्नति, बच्चे एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है या जिनको भी हिंदी आते हैं उनके लिए एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं. अगर टाइम नहीं बच रहा है तो जो क्वेश्चंस दिए हैं वो जरूर प्रैक्टिस करनी. जितनी रिएक्शंस के नाम दिए हैं वो तो जरूर ही करने हैं. I actually have an old version with me, so you can see that there are new or given. If they are not given, I'll share the link in the description. Okay. Any other thing? कुछ और है तो बता दो, पूछ लो. केमिस्ट्री आसान है, अच्छे से नंबर लाने हैं. पिछली बार जिस बच्चे को मैंने बताया था उसने बहुत अच्छे से किया था. पिछली बार मैंने कोई भी ऑनलाइन सेशंस नहीं लिए थे, बट दे स्कोर्ड रियली वेल. डू दिस रिएक्शंस, यू विल स्कोर रियली वेल इन द केमिस्ट्री. मतलब 100% 100 मार्क्स लाने के भी चांसेस है. ओके. Do make me proud. Let me see that you get 100 out of 100 in chemistry so I can show off in front of maths people. Yes, chemistry we can score 100. I did that in last time. I one of the child score 100 out of 100 in chemistry. I wish I would like help. Okay. Any other query? Any other questions?
So all the best. Comes with a flying color, practice chemistry, and one more important thing, those who are preparing for NEET or your IIT examination, these are the type of questions which they ask you in the IIT examination as well. So if you are learning for your CBSE paper, you are by default practicing for your IIT NEETs. So be happy with the efforts for one examination, you are actually getting result for two. Okay. So as I can see that no one has given me any query till date. So bye, toodles, take care. Do come with the flying colors.